Good morning everyone. Welcome to MatSciOdia. ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର ସମ୍ବିତ ସାର୍ ତମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପିଲେ ଆଜିର କ୍ଲାସ। ପିଲେ ଆଜିର ଜୁଲୋଜି କ୍ଲାସରେ ଆମେ ମାନେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରିବା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତମମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବ ଏବଂ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ନୋଟ ଆଉଟ୍ କରିବ। ତ ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ବିନା କୌଣସି ଡେରି ନ କରି ଆମେ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମର ଆଜିର କ୍ଲାସଟିକୁ। ତ ପିଲେ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମଲ୍ଟିପଲ ଫିଜନ୍ସ ଉପରେ ପଢେଇବି ଆଉ ବୋର୍ଡିଂ ଉପରେ। ତ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାस रे आमे माने बाइनरी फिजन ऊपर डिस्कशन करथिले जोटी आमे बाइनरी फिजन को तीन भागरे भाग करथिले। गोटेला सिंपल बाइनरी फिजन, गोटेला लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, और गोटेला ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। एवं सेमानकर किछि सुइटेबल एग्जांपल को देकी आमे माने क्लास आगु को नेथिले। तो आजिर क्लास रे आमे माने डिस्कशन करिया जाउथिले कोन ना मल्टीपल बाइनरी फिजन। तो ये मल्टीपल बाइनरी फिजन टी कोन, ये कोठी देखा जाय थाए ता ऊपर आज आमे डिस्कशन करिवा। Multiple binary fission under unfavorable condition, under condition animal show करे कौन multiple fissions। देख पे गोटे कथा मुझे तुम मानक बुझे दबाक चाहे, जो समय खाद्यर परिमाण ठीक अच्छी से जगह तुम बाइनरी फिजन देखा सब जगह खाद्य अवेलेबल है तो नॉर्मली गोटे सेल ग्रो है तार से बाइनरी फिजन तुम मैंने देखा पाइब। बट जो टाइम रे खाद्य अभाव आसूची तो से टाइम रे जीव मैंने कौन करते निजक प्रथम आगे गोटे प्रोटेक्शन बा गोटे सीट र फॉर्मेशन करती ता भीतर निजक मल्टीप्लिकेट करे जितेबाला से सीट तुम ब्रस्ट हो जाए फेवरेबल कंडीशन आसे से छोट छोट तुम कौन ना ऑर्गेनिजम्स गुड़िक बाहरी आसती गोटे सेल थी था मल्टीपल हे फेवरेबल कंडीशन आसो से बाहरी आसवे। हाँ, one mother converted into many offspring तो गोटे मदर रु बहुत सारा ऑफस्प्रिंग आसबे। सीन इन एमोइबा कोन देखा जेते, सीन इन एमोइबा प्लाज्मोडियम। तो गोटे एग्जांपल दबा कोन मल्टीपल फिजन इन एमोइबा। अच्छा, in unfavorable condition, in unfavorable condition amoeba surround himself माने से तार निज चारिपटे कौन करे बाय 3 लेयर सीस्ट वॉल, बाय 3 लेयर मु तार सब डायग्राम तुम मान करके बुझेमी, डोंट वरी। 3 लेयर सीस्ट वॉल बुझी पारछ कि सीस्ट वॉल फॉर्मेशन करता है। द न्यूक्लियस डिवाइड इनटू मेनी न्यूक्लिय, द न्यूक्लियस द भीतर जो न्यूक्लियस टी थाए द न्यूक्लियस डिवाइड इनटू बहुत सारा न्यूक्लिय को कौन हम सॉरी न्यूक्लियर क्रोमाटिन ब्लॉक को कौन हुए ना कन्वर्ट होता है। माने एमानंकर माने न्यूक्लियस जदि देखो एमाने समस्त गोटिए सेल वाला है, यूनिसेलुलर एमाने समस्त यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। तो एमानंकर बॉडी टे पूरा यूकैरियोटिक सेल जहाँ अछि एमानंकर बॉडी से जिंस ही अछि। तो एमानंकर जेतेबेले क्रोमाटिन ही गोटे अलग अलग हो जाउची मदर क्रोमाटिन समस्त गोटे गोटे ब्लॉक फॉर्मेशन करूछंती माने सेपरेट हेकी दैट्स मीन इंडिकेट कोन करूछे सेमानंकर गोटे स्पेशल सेल कन्वर्ट हे जिवो। जेतेबेले न्यूक्लियस ही डिवाइड हेकी बहुत सारा तमरो कोन छोट छोट क्रोमाटिन ब्लॉक को कन्वर्ट हे पारुची दैट्स मीन साइटोप्लाज्म मतलब सिमिलरली सेही बडी भाबरे से मध्य कोन होबो
तमर कन्वर्ट हो जिवो क्रोमैटिन ब्लॉक रो फॉर्मेशन होबो ईच न्यूक्लियस ईच ये जो न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन ब्लॉक ईच न्यूक्लियो ब्लॉक ये कौन करियो पिले सराउंड itself few किछि कौन amount of cytoplasms to form amoebula MOEBUL moebula फॉर्मेशन करे दो आउ कौन in extreme adverse condition the amoebula এটা আমি তলକୁ ନେଇ ଯାଉଛି in extreme adverse condition the amoebula surrounded by a cyst is called ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପିଲେ ନା pseudospore ହେଲା pseudospore ବୋଲି କହିବା its help in disperse ତାର କାମ ହେଲା କଣ disperse କରେଇବା disperse okay sorry dispersal भी तुम माने करि परिबो when favorable conditions come ଯେତେବେଳେ favorable condition ଆସିବ when favorable condition comes जो टाइम रे favorable condition तमर पिला आसीबो the mother wall rupture wall মানে সেটা ভাঙ্গিଯିବ ତା जो wall टा भांगीଯିବ then tiny amoeba comes out tiny amoeba comes out maintain independent life बुझी पारछो तो डायग्राम टा हम माने एडी कर दबा देखा तो ये हला मदर अमोइबा मदर मदर अमोइबा तो ये गोटे सीस्ट निज चारि पटे गोटे सीस्ट फॉर्मेशन करिवो तीन लेयर वाला तो हमें कोशिश करना सीस्ट सीस्ट देहरे छोटे छोटे क्रोमैटिन ब्लॉक रो फॉर्मेशन होगा जो सीस्ट तुम मन देखियो जो सीस्ट रहला सीस्ट देहरे कोन हम पिले ब्लॉक रो फॉर्मेशन ब्लॉक रो फॉर्मेशन हो दिन तापरे कोन हो ना से तमर से लेयर रहला
ହେଲା एरा सब छोट 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 से सब कौन करेंगे ना साइटोप्लाज्म को सब माने कौन ग्रहण करेंगे साइटोप्लाज्म को ग्रहण करेंगे जगह ग्रहण करके समस्त कन्वर्ट हो कौटी ना टाइनी आमोइबोला एरा सब कौन पिले एमाने सब करेंगे आमोइबोला ओके सो आमे आमोइबोला बोली कहउछन जेतेबेले तमर फेवरेबल कंडीशन आसीबो एको तमे माने आउ मध्ये कहि परिबो कोन पिले ना सेडो स्यूडो ओडियो स्कोर मध्ये जेतेबेले तमर फेवरेबल कंडीशन आसीला ये तमर कोन हो जे पूरा जो सीएसटी तमर एमते रप्चर करी तीनटा लेयर थिला ना ओके तीनटा तीनटा रप्चर करछे अदर सब छोट 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 सब आमे पिला माने बाहरी तो या को जो कुआ जाउची कोन पिले ना मल्टीप्लस फीचर ये सब या तमर कोन टाइनी आमोई बोला आमोई बा लिखि पारि ओके ये रप्चर हो गला ये मान समस्त बाहरी आसले तो तुम माने लिखि परिबो multiple diffusion in ହେଲା अच्छा ये तो तुम थिला आमोइबा ऊपर एबे आसीबा हम कोडी ना बोर्डिंग बोर्डिंग कोन बुझिबा एटा गेमुल अछि मु गेमुल फॉर्मेशन ता तमर पले नेक्स्ट क्लास रे पढाई देबे आज तो आगे तुम माने बुझो फास्ट खाली पढि देले कोन हबो मेन कथा ला मेकानिज्म ता बुझिबार अछि लेकिन एथरो एमसीक्यू आसीबो ना बहुत सारा एमसीक्यू आसीबो सेडो कोडियो स्कोर कोन आमीबुला कोन सिस्ट केते लेयर वाला को ब्लॉक फॉर्मेशन होउची आफ्टर सिस्ट फॉर्मेशन परे ए टाइप ऑफ क्वेश्चन आसीबो बिहेवियर अच्छा तो बोर्डिंग रो प्रोसेस पढिबा बोर्डिंग रो प्रोसेस कोन बस बोर्डिंग रे कहउची कोन बेले तो तमर देखा जायता कोडी तुम मान देखिबो ये तम साधारण भाबरे हाइड्रा केस रे ही देखा जायता आउ ईस्ट रे देखा जायता बॉडी तुमर फंजाई रे जो ईस्ट अछि Saccharomyces cerevisiae तुम माने पढि पाई जीवो an outgrowth or board an outgrowth or board is seen देखा जाता है in sorry on parent body देरे तमे माने गोटे देखिया पाइबो कोन गोटे बोर्ड गोटे छोटो आउटग्रोथ रे तमे माने देखिया पाइबो ना लगे आउ कोन the board may be unicellular unicellular protozoa के protozoa sponges or hydra प्रोटोजोआ मान के तमे माने देखिया को पाइबो हला यूनिसेलुलर आउ जो तमे माने देखिया पाइबो पले मल्टीसेलुलर तमे देखिया पाइबो कोडे बा सुक्टोरिया स्पंजेस हाइड्रा मान के तमे माने देखिया को पाइबो माने हमर जो कोन इंटरनल टाइप रो जो सेल गुडी क थांते सेठी तम मानकर देखा जाई थाए से जो हमर कोन asexual reproduction हुए सेटा तमरो कोन ना सेला तमरो इंटरस्टियल सेल हाइड्रा मानकर देखा जाय यूनिसेलुलर एठी इंटरसेलुलर सेल तमे माने देखिया को पाइबो कोठी हाइड्रा स्पंजेस ऑफ हाइड्रा मानकर केस वन और मोर बॉड्स ते गोटिए भी हे पारे दीटा भी हे पारे one or more bots may be produced
may be produced from a single parent. From a single parent माने गोटिए parent रे गोटिए किंबा दीटा बर्ड मध्ये फॉर्मेशन होई थाए आपन कहू द birds develop into an the birds develop into an individual then detach from mother ରୁ detach ହେଇଛ प्रथमे से कोन बर्ड ता प्रथमे डेवलप हैला इनटू ए इंडिविजुअल गोटे इंडिविजुअल प्रथमे डेवलप हबो वयस्क देन तापर ता मदर प्लांट मा प्लांट रू कोन हबो ना से अलगा हेई जिवो हला मदर मदर बॉडी मेंटेन इंडिपेंडेंट एरा तमर पिले बॉडिंग आको हम कोन कहउछन आको हम कहउछन बॉडिंग तो बॉडिंग तमर पिले मन रखिताओ बॉडिंग में भी साधारणतः भाबरे इंटरनल और एंडोजेनियस एज इन एसिनाटा एंड एक्सटर्नल और एक्सोजेनियस इन हाइड्रा रे देखा जाय माने दी प्रकार बॉडिंग माने तमर इंटरनल बॉडी देखा जाय थाए एट लिखि दउजी बॉडिंग आर टू टाइप्स राइट एरे हला तमर कोन इंटरनल बी हला तमर एक्सटर्नल एटा तमर एक्सोजेनियस एंडोजेनियस ओके एक्सोजेनियस ये हला तमर एंडोजेनियस बुझि पाले कि एटा तमर देखा जेते कोडी पिले एटा तमर देखा जेते एसिनाटा एटा तमर देखा जेते हाइड्रा हला एसिनाटा देखा जेते ये तमर हाइड्रा रे देखा जेते एटा माने कहली एटा ही तम मानकर कोन बॉडी इन हाइड्रा तो नेक्स्ट क्लास रे आमे माने पिले डिस्कशन करबा कहा ऊपर नेक्स्ट क्लास रे आमे डिस्कशन करिया कोन ना गेमेल फॉर्मेशन इन स्पॉन्जेस तर तुम मानकू भी देखैथिली कोडी हम पूरी करा 11th तुम मान देखियो 11th में तो पूरी करा पड़ी से टाइम में बोले पिला मानकू कहिथिली स्पॉन्जेस रे तुम गेमेल फॉर्मेशन हुई ताई तो नेक्स्ट क्लास रे आमे माने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊपर डिस्कशन करिया ता सहित आमे माने जे बाकी रहिला तुम मानकर गेमेल फॉर्मेशन इन स्पॉन्जेस ता ऊपर मध्ये डिस्कशन करिवा ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇ କ୍ଲାସଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ତମେମାନେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ନୋଟ ଆଉଟ୍ କରିଥିବ ତ ଠିକ ଅଛି ପିଲେ ଆମେ ମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆଉ କିଛି इम्पोर्टाट टॉपिक ऊपर डिस्कशन करबा से पर्यंत पई समस्त धन्यवाद समस्त भले रहो ता सहित जब तुम मन वीडियो भल लागला त तुम मन ताको लाइक करो शेयर करो आ सब्सक्राइब करो एवं डाउट थिले मते कमेंट करो तो समस्त भले रहो एवं समस्त को जय जगन्नाथ थैंक यू।